So again I am at the so-called Marine Drive and last वीडियो में मैंने आप लोग को रायपुरियंस के फेवरेट मोमोज खिलाए थे एंड इस वीडियो में मैं आपको खिलाता हूँ मेरे फेवरेट मोमोज। नाउ इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक कि ये मोमोज होते हैं नहीं होते हैं, ऑथेंटिक मोमोज नहीं हैं, क्या है जो भी है मेरे को पसंद है एंड मेरे को यही अच्छे लगते हैं एंड ऑलमोस्ट मैं रेगुलरली इसको खाते रहता हूँ। सो ये मोमो उस सेम प्लेस में नहीं मिलते, ये मिलते हैं उसी से थोड़ा आगे है मोमोज अड्डा। सो आई हैव ऑर्डर्ड इट ऑन स्विगी एंड वो किसी भी वक्त आता ही होगा। बस नाउ व्हाई आई एम ऑर्डर्ड ऑन स्विगी बिकॉज ऐसे ही मन हुआ यहीं बैठने का, तो हम ये बैठ गए। आप लोगों ने फ़ोन्स एंड गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की तो अनबॉक्सिंग बहुत देखी हो, आज हम करते हैं फूड की अनबॉक्सिंग। Some tissues, so yes, this is a somewhat chutney made with cheese and oregano and all, whatever. This is very interesting kind of. This is normal. This is a ketchup. This is Szechwan chutney or sauce, whatever you call it. Here is our momos. So here is a momo. It's basically a pan-fried Szechwan sauce momos, and let's taste it. So basically it's a normal momos which are pan fried like paneer chili with small crumbs of like chopped onions, garlic and chili sauces and whatnot. It's really a nice combination to have. I really love this momo. If you want to try something new and tangy and different, then do try it. So yeah, this is the momos. This is the cheese chutney which I was talking about. It tastes really very good with this chutney.